happy. So today we are going to begin with the lesson number 3, that is more parts of a computer. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about some additional parts of a computer. So a computer is made up of different parts. All these parts together make a computer work. ये कंप्यूटर जो होता है different parts से बना हुआ होता है, तो ये सारे parts मिलके कंप्यूटर को work करने में help करते हैं. We have already studied about some parts in the previous class. Let us study about some more about them. So हमने क्या करा था, last class में हमने parts के बारे में पढ़ा था. अब हम कुछ additional parts के बारे में पढ़ेंगे. So additional parts of a computer is UPS, that is uninterrupted power supply. जब लाइट चली जाती है तो एकदम से your system will not shut down. So UPS stands for uninterrupted power supply. It is a battery to store electrical power. उसमें क्या होती है, एक बैटरी होती है जिससे वो इलेक्ट्रिकल पावर को स्टोर करके रखता है. It keeps the computer working for some time even after electrical supply is interrupted. ये क्या करता है, कंप्यूटर को वर्क करने देता है अगर पावर सप्लाई में इंटरप्ट हो रही है बीच में तो. Now let's talk about speakers and headphones. So we use speakers and headphones to listen to different types of sounds and music stored in a computer. हम क्या करते हैं, जो different sounds और music stored होता है कंप्यूटर में वो सुनते हैं स्पीकर और हेडफोन से. Sounds from the speaker can be heard by everyone. जो sounds होती है स्पीकर से कोई भी सुन सकता है, मतलब कोई और ना सुने, स्पीकर से तो हर कोई सुन सकता है और हेडफोन से कोई और नहीं सुन सकता. By using headphones, a person can hear the sound generated by a computer without disturbing others. अगर आप headphones use करोगे तो उस sound से कोई और disturb नहीं होगा, किसी और को sound नहीं जाएगी. Only the person who is listening to it, he or she will only hear the sound of the music. So a headset is a device that has both microphone and a headphone. एक headset क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें माइक्रोफोन भी होता है और हेडफोन भी होता है. हेडफोन इन्वेंटेड बाय नेथनल बेल्डविन इन 1910. किसने इन्वेंट किए थे, नेथनल बेल्डविन ने किए थे 1910 में. सो these are your headset. This is your headphone, this is your speaker. Now let's talk about printer. A printer is used to print images, photos and text on a paper sheet. The printed copy is called printout or hard copy. जो एक printer होता है किस लिए यूज होता है, images होती है, photos होती है, text होता है, उसको आपके पेपर शीट पे ले आता है. और प्रिंटर से जो कॉपी निकलती है, प्रिंटेड कॉपी, उसको ये क्या कहते हैं, प्रिंट आउट कहते हैं, या फिर we call that as hard copy. And the picture in your or PDF in your system is known as soft copy. So the commonly used printers are dot matrix. This is the image of a dot matrix printer. This is inkjet printer and this is laser printer. These are the commonly used printers in today's world. Now let's talk about microphone. So a microphone is used to record voices and different sound. ये किस लिए यूज होता है, voices और different sounds को record करने के लिए यूज होता है. Now let's talk about hard disk. Hard disk is normally fixed inside the CPU box. ये कहाँ पे fixed होती है, ये normally आपके CPU box के inside में fixed होती है, मतलब उसके अंदर होती है. It can store large amount of data in a computer. Large amount of data को store करके रखता है आपके कंप्यूटर में. Now let's talk about joystick and gamepad. Joystick and gamepad controls the movement of a cursor or an object on the computer screen. ये क्या करता है, जॉयस्टिक और गेम पैड कंट्रोल करता है आपकी मूवमेंट, आपके कर्सर का आपकी गेम स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे. इट हेल्प्स टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. इसकी हेल्प से आप गेम्स खेल पाते हैं जॉयस्टिक और गेम पैड की हेल्प से कंप्यूटर पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीडी डीवीडी एंड पेन ड्राइव, जो आपके डेटा को स्टोर करके रखते हैं. वी कैन यूज सीडी डीवीडी एंड पेन ड्राइव टू स्टोर द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर. इससे हम स्टोर करते हैं उस वर्क को जो हम अपने कंप्यूटर पे करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीडी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क. A CD is round in shape and is used to store a lot of information. ये क्या होती है, राउंड में होती है शेप में, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है. इट कैन स्टोर टेक्स्ट, फोटोज, सॉन्ग्स एंड वीडियोज. ये आपके टेक्स्ट को, फोटोज को, सॉन्ग्स और वीडियोज को स्टोर करके रखती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीवीडी, दैट इज डिजिटल वीडियो डिस्क. डीवीडी इज आल्सो राउंड इन शेप. ये भी राउंड शेप में होती है. So its storage capacity is very high. We can record complete films on a DVD. इसकी storage capacity बहुत high होती है,
हम पूरी की पूरी फिल्म रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने डीवीडी में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेन ड्राइव. A pen drive is also called a flash drive. एक पेन ड्राइव को हम क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड इजिली पोर्टेबल. ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होती है और इजिली इसे पोर्ट कर सकते हैं. इट कैन स्टोर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी. वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. We put the pen drive inside the USB port which is inside the CPU box. हम पेन ड्राइव को कहाँ रखते हैं? यूएसबी पोर्ट के अंदर लगाते हैं, जो कहाँ पे होता है? सीपीयू बॉक्स में होता है. Now let's talk about scanner. A scanner help you in copying text and images printed on the paper. ये help करता है आपको कॉपी करने में टेक्स्ट और इमेजेस जो कहाँ प्रिंट होता है? आपके पेपर पे. और store them into the computer, और store कर देता है आपके कंप्यूटर में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.